Assalamu alaikum. Let's catch up from the previous lecture, which was the general external flow characteristics. Let's discuss about some very basic concept regarding immersed bodies or external flows, which are lift and drag. So होता क्या है हमने as we discussed in the previous lecture that when the body moves in fluid or the fluid moves over a body, they interact with each other, and what happens due to this interaction, कुछ forces generate होती हैं, और those forces actually are responsible for the characteristic of the flow or performance of the bodies. सो हम यूजुअली फोर्सेस को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फोर्सेस या प्रेशर इफेक्ट और प्रेशर फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस या शेयर फोर्सेस, राइट? सो प्रेशर, हम सबको पता है प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वो तमाम फोर्सेस पर यूनिट एरिया जो किसी बॉडी के ऊपर नॉर्मल एक्ट कर रही हैं, उनको हम प्रेशर से डिनोट करते हैं, या वो प्रेस और वो फोर्सेस जो कि किसी सरफेस के ऊपर टेंजेंट होती हैं या अलोंग द सरफेस होती हैं, हम उनको शेयर शेयर फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली बिल्कुल वही डेफिनेशन है। यहाँ पे हम उसको प्रेशर कहते हैं और वॉल शेयर स्ट्रेस कहते हैं। ओके, so for example यहाँ पे एक the picture, we can have a look at this picture. With this figure actually shows a pressure distribution. We will talk about the distribution later. So what actually it is, these vectors are pointing towards the surface perpendicularly, and there is a flow coming over it. We will discuss what this flow is all about. So then this actually what I previously I talked about the airfoil shape. This shape is basically airfoil. अगर आप किसी भी विंग को अगर कट करेंगे, क्रॉस सेक्शनली कट करेंगे, तो यू विल सी दैट उसका जो सेक्शन है वो इस तरह नज़र आता है। तो खैर, एनीवेज दिस प्रेशर इज बेसिकली the acting perpendicular to the surface, while the shear stresses are tau w for wall, are acting along the surface of the wing or any body, और ये नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। सो हम these are two different types of actually forces acting on the bodies. Now सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इफ़ आई नीड टू फाइंड प्रेशर प्रेशर फोर्स क्या है, या आपके पास शेयर फोर्स क्या है जो नॉर्मल है। फॉर दैट वी नीड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर। अब हमें इस प्रेशर की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए इस बॉडी के अलोंग। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है कि प्रेशर किस तरह वेरी हो रहा है अलोंग द सरफेस, एंड वॉल शेयर स्ट्रेस किस तरह वेरी होती है। सो हमें वैसे आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द actual distribution of the pressure or tau w in order to find the forces. So we have two different types of forces. One is drag force and one is lift force. What are drag force and lift force? The drag forces are the resultant force in the direction of the upstream velocity. Means अगर आपके पास वो सॉरी वो तमाम फोर्सेस जो पैरेलल हैं या along the direction of the velocity हैं, वो तमाम फोर्सेस जो इस डायरेक्शन में लग रही हैं along the u is are called drag forces, and those forces which are acting normal to the upstream velocity, this capital U is upstream velocity, the velocity which is approaching the airfoil or the body, जो force along the direction लग रही है, जैसे यहाँ पे along the direction, if I just zoom this a bit, uh, just hold on. So if you see closely, this fancy D is basically showing the drag force, and this L is showing the lift force. So what are these D and L? These are actually, we will see in the next slide, these are cumulative effect of these two different types of forces. One is pressure and one is torque. So lift is resultant force acting normal to the upstream, and drag is acting along the upstream velocity, right? So we will see in the next slide how it go how what are lift and drag forces in detail. So moving further, what happens? So this is a very important slide or important figure to understand. I'll just zoom it a bit. If you see this figure, we have an surface represented by an orange line. ये एक arbitrary surface है. It could be a surface of any object. Fine.
So you have two different types of forces. We have pressure forces P dA. So dA actually shows the differential area of this surface, since it's just in x y, so the other side is into the paper. So differential area of this line represented by dA, and if you multiply it with the pressure, you have that normal force acting on this surface, right? Okay, this surface is making an angle theta with x-axis, and this is an arbitrary angle theta. You can have theta from any axis, but right now यहाँ पे थीटा जिस तरह डिफाइन हुआ है वो इस सरफेस की पोजीशन बता रहा है. सो दिस फॉर एग्जांपल दिस सरफेस यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है. सो एज यू चेंज द थीटा यू कैन हैव a different surface, but for instance we have a generic value of theta. So इस surface के ऊपर एक PDA force है जो कि pressure times differential area है, and we have another force which is along the surface or parallel to the surface, which is tau WDA. Tau is the wall shear stress times the differential area. So these, when you multiply this P and D and tau W2dA, you are having forces, right? So these forces are neither in x direction nor in y direction. ये along the surface act कर रही हैं. Okay, and this is making angle theta. So if I ask you to find the pressure, if I ask you to find the force which is acting along the x direction, तो आप सिंपली अगर आप स्टैटिक्स के रूल्स लगाएं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएं, तो डी एफ एक्स द डिफरेंशियल फोर्स अलोंग द एक्स डायरेक्शन किसके बराबर होगी? पी डी ए. दिस इज द फोर्स टर्म कॉस थीटा. अगर आप यहाँ गौर कीजिए कि यहाँ पे पी डी ए times PDA times cos theta will give you this force which is acting along this line you see this line. So this is the first term and this is along the x-axis, so this will be positive. इसका direction जो है वो towards the x-axis है. But and similarly tau DAW, this is the force acting on this surface uh, along the surface, uh, like shape parallel or making it tangently. So you are multiplying it with sine theta because this has this component which is along the x direction. So if you just draw a triangle you will figure it out what I'm trying to say. So this PDA is the force and cos theta is basically the x component of the PDA force, and tau WDA sine theta is the x component of this force which is acting along the surface. So this is the differential force along the x direction due to these two forces, right? Which is acting perpendicular to the surface and parallel. Similarly, the dFy force acting on this surface would be minus PDA because the PDA and sine theta because PDA is acting downwards and the positive axis is upwards. So that's pretty simple. You are quite familiar with this. And similarly this TWDA is if I insist you to draw this by your hand, so you will see that the cos theta of this TWDA vector will be will be positive, right? This is acting upward. As you can see the direction of the vector is going upward, right? So this is DFI. Now this is important. So you have two forces which are differential forces acting on x-axis and acting on y-axis along this small differential area dA. Now if I integrate this equation, right, this equation, if I integrate this equation along the whole area of this arbitrary body or shape, whatever, so what would happen? uh, I'm integrating in the forces which is along the direction of x, which is actually along the u, right? This is represented by d, which is the drag force, and the forces which are along the y, which is perpendicular to the u, are represented by L, the lift force. Just hold on, let me just. So here you go. This is the lift force acting on the surface, and this is the drag force acting on the surface. And I repeat, drag is along the u and L is perpendicular to the u. So now just let's have a look at these relations, because so we have dA, which is a differential area, and so you need to integrate it throughout the whole area of the body. We need P as a function of theta, which means as you change the theta, you are actually changing the point or the location on that arbitrary body. For example, if you're considering an airfoil, as you move, if you change the theta, you are actually moving at a new location. So you need P and you need tau w as a function of theta. Means that you need, आपको हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर की वैल्यू चाहिए होगी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, जब भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं.
एंड सिमिलरली इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि आपको पास ड्रैग और लिफ्ट फोर्स आ जाए। बट आमतौर पर दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बिकॉज आपके पास पी का की प्रोफाइल नहीं होती, आपके पास पी की प्रोफाइल नहीं होती, आपके पास टी डब्ल्यू की प्रोफाइल नहीं होती। प्रोफाइल से बात करें, आपके पास किसी बॉडी के हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर और टॉर डब्ल्यू की वैल्यू मौजूद नहीं होती। तो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आप प्रेशर निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी बॉडी की सरफेस के ऊपर डिफरेंट प्रोब्स लगा दें, सेंसर्स लगा दें, तो वो हर सेंसर आपको किसी न किसी पॉइंट पर एक प्रेशर की वैल्यू दे देगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट प्रेशर, सो मैनी सेंसर्स, आप प्रेशर को प्लॉट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ थीटा के उस सरफेस पर, और फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट। क्यूम्बरसन प्रोसीजर है, काफ़ी मुश्किल प्रोसीजर है, तो हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते। But usually this is the fundamental equation for drag and lift, which I'm जो यहाँ लिखी हुई है. Moving further, so how to deal with this problem? We have lift and drag coefficients CL and CD. So you can see these are dimensionless parameters जो कि experimentally निकलते हैं. If you remember, हम आपने चैप्टर नंबर 7 में डायमेंशन एनालिसिस किया था, जिसमें आप क्या करते हैं, what you do, uh, you have बॉडी जिसके ऊपर एक फ्लो हो रहा होता है, आप उसी क्रिटिकल पैरामीटर्स को, वेरिएबल्स को अलग करते हैं, देन यू अप्लाई द बकिंगम पाई थ्योरम एंड कम अप विद सम डायमेंशनलेस नंबर्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। दिस सी एल एंड सी डी आर डायमेंशनलेस नंबर, जिसमें इसके कोई यूनिट नहीं है, एल जो है लिफ्ट फोर्स है, और 1/रो यू स्क्वायर ए, इनके यूनिट्स भी एग्जैक्ट, एल और डी के बाय द वे यूनिट जो है वो न्यूटन है, बिकॉज इट्स अ फोर्स, राइट। तो इसके यूनिट्स भी न्यूटन होंगे, तो न्यूटन पर न्यूटन एक्चुअली हैज़ नो यूनिट्स, राइट। सो वे यहाँ पे ये जो रूल रिलेशन है, ये ज़िंदगी आसान कर देते हैं, मेक्स लाइफ इजी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दीज रिलेशंस फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एंड अ पर्टिकुलर फ्लो, आप लिफ्ट निकाल सकते हैं अगर आपके पास सी एल की वैल्यू है, सी डी की वैल्यू मौजूद है, और वो जो है वो आपके पास एक्सपेरिमेंट से आ जाती है। ओके, सो यहाँ पे सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ एरिया। यू तो पता है कि दिस इज अपस्ट्रीम वेलोसिटी, जिससे फ्लो जो है उस बॉडी को अप्रोच कर रहा है। एरिया क्या है? एरिया डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी हैव टू डिफरेंट केसेस। फर्स्ट केस, इस केस में अगर फ्लो इसको हिट कर रहा है, तो आपके पास d, जो कि इसका डायमीटर है, टाइम्स लेंथ। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे, तो यू विल सी अ रेक्टेंगल, मतलब अगर आप इसका जो ये वाला व्यू है, towards the from the u perspective, you will see that the area is basically nothing but the shape will, the cylinder will appear as a rectangle, तो उसकी उसका एरिया क्या होगा, d times length, and this is called frontal area. This is a very important term. Frontal area, इस केस में फ्रंटल एरिया जो कि आपके पास एक सिलेंडर के ऊपर एक बॉडी हिट कर रही है। लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल, दिस इज एयरफॉयल, जिसका एरिया जो जो इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो कंसीडरेबल एरिया है, जिसकी वजह से फ्लो जो है वो फ्लो करेक्टरिस्टिक्स बदल सकती हैं। इस केस में हम उसको कहते हैं प्लेन फॉर्म एरिया, और यहाँ पे वो लेंथ टाइम्स दिस इज कैम्बर्ड लेंथ, वी विल डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। सो यहाँ पे इसका वो एरिया कंसिडर किया गया है जो कि इसके ऊपर है, मतलब लेंथ टाइम सी, you will see, like if you see from the top, you will again see a rectangle, but in this case you will see ये इसका frontal area और ये plane form area। ऐसा क्यों किया गया, we will discuss later in the chapter कि why these two different types of areas are so important while when you are discussing flow over immersed bodies। Okay, so moving further, uh, this is basically the lift and drag concept, very basic concepts. We will be having uh, numericals related to these topics, and हम वहाँ पर चीज़ें और क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह। So this is it regarding the lift and drag concept, and this lift and drag concept will be covered in detail in the later part of this chapter, so don't worry about that। हम इनको बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 में, and these are really important concept in order to understand if you are dealing with aerodynamics and external flows of bodies or structures। So thank you very much.